Hello. Yes, sir. देखो, this is your block 2, unit 7, learning resources and ICT for mathematics teaching and learning. Okay. ଏଠି this unit is related to the various learning resources, right? So now, what is learning resources? Okay. So learning resources means a source. From source we have resources. Source is something which from where we can gather information, we can collect data, right? Resources are something that support our activities, right? So in this sense, for learning of the students, a teacher may be considered as a resources because he is resourced with, he is equipped with the knowledge, the skills, the ability, the experiences of mathematics to teach students. ଶୁଣି ପାରୁଛ ସମସ୍ତେ clearly? Yes, sir. Okay. So, learning resources are the supportive material that facilitate students' learning. So, the first primary learning resources we can say the teacher, because we assume the teacher is the source of knowledge. Teacher provides instruction or learning experiences to the students. Okay, this is the primary resources. Apart from the primary resources, apart from the knowledge of the teachers sometimes need certain other materials, right? That materials support students learning. Okay, so this is defined as the learning resources. These may be the text, may be the audio video material, may be digital aid that assist you in effective transactions of the curricular content. If you want to transact a content in curricular, so you require different text, different audio material, different chart, different aids like this. So otherwise it is known as your teaching learning materials. ତାକୁ ଆମେ ଏବେ learning resources ବୋଲି normally କହୁଛେ. So major learning resources normally we know the teacher, the human resources and the textbook prepared by the central and state government or different agencies. These may be mandate and improvised or material available in nature. You can find learning resources in the immediate environment. In immediate environment, we have also various learning resources. For example, a mathematics club is there in the community. So that mathematics club can be used as a learning resources. Okay. So in this advancement of technology, we can also use the digital platform or digital learning resources that support students' learning, right? Among these resources, you have your textbook, your printed ho, বা digital ho, এই যে material আমি use করছে, this is a digital learning resources, workbook, activity book, flashcard, poster, educational games, magazine, periodicals, study guides, right? Teachers guides, laboratory model, reference book, radio, television, projector, LCD, internet, mobile learning, e-learning, एवढा सब जहाँ तुम OER open educational resources कहुचे. So all these comes under your learning resources, right? So these resources are used to teach not only mathematics but for other subject. So importance and use of learning resources. Why it is importance to use various learning resources, right? The basic importance is that these learning resources support students' learning. It has many purposes. So lecture method is a common, easier method. We know many times subject matter are not conveyed appropriately to learner through lecturing styles. Lecture is a very traditional style. Sometimes most of the learning cannot be effective just by adopting the lecture method. So along with the lecture method, we have other methods like your discussion method, questioning method, right? So whatever methods may be, we always require certain additional teaching learning materials. Okay. The creative intervention of teacher can bring a dynamism in the classroom by employing learning resources in the lecture method. Resources can be used in the learning lecture methods. The same is true for other teaching methods.
learning resources are imperatives in teaching learning situation due to following features. Why it is importance, right? Normally, we know that it helps the learners to involve fully in the learning, complete involvement students ହେଇପାରିବ and students can sustain motivations. It facilitates learners to comprehend the subject, understanding of the subject or concept effectively. These resources may be helpful. Okay, assist the learners to help effectively and remember the concept for a long time. Better remembrance development habo, right? Interesting interest habo, innovative habo, comprehend the concept with clarity and bring a vividness in the learning. It helps the learning to concretize the abstract concept. Different the abstract concept can be concretized, right? We can provide concrete experiences by using various teaching learning materials. And it also reduces the verbal communication on the part of the teacher. ଯଦି ଆମେ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ସ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଦେନ୍ ଯେ ଭର୍ବାଲି ଯେତିକି କଥା କହୁଥିଲେ ସେଟା କମିଯିବ ରାଇଟ୍ so it can reduce the verbal communication on part of teacher and also it develop the inquisitiveness or curiosity and interest in learning. These are the importance and benefit of learning. ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ old saying ଅଛି what I hear I forget, what I see I remember and what I do I understand. What I do means students must involve actively in doing some things that will sensitize all the sensations. Okay, and also we learn 1% through test. Different sense organ द्वारा ଆମେ learning କରୁଛେ 1.5 to touch or 3.5 smell, 11% ଆମେ through hearing and 83% to sight. ଦେଖିଲେ ଆମେ ଅଧିକା କ'ଣ ମନେ ରଖିପାରୁଛେ ଅଧିକା ଲର୍ନ କରିପାରୁଛେ. Similarly 90% ଆମେ କ'ଣ remember କରିପାରିବା when we say and do. We do something and we say something or we communicate something, then the 90% things can be remembered, right? This is a data given here and all this data emphasizes or says that how these touching learning materials are important for the students in the classroom situation. Okay, ଏଠି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିସୋର୍ସେସ୍ କଥା କହିଛି ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ସେ କେମିତି ପିକ୍ଚରିଆଲ ୱେଜ୍ରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି ଏଠି ଦେଖାଇଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ କହିଲେ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ରହୁଛି ତା ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଅଛି ତାର ହୋମ୍ ପରିବେଶ ହଉ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ହଉ ସିଚୁଏସନ୍ ହଉ କମ୍ୟୁନିଟି ହଉ ସେଇ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ସୋ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍. So we have discussed above readily available and made, but as a teacher, it may not always be possible to procure these resources for many reasons. In such cases, you can opt for your natural environment learning resources. Such resources are available in the classroom, own house, or nature. Nature is the biggest reservoir of learning resources. These resources are known as improvised aids or improvised learning resources. Improvised resources are those resources that are prepared from a waste materials or materials available in the immediate environment. गोटे concept आसे तुमर कौन ना improvisations. Improvisation of learning resources जोटा कि टीचर निजे प्रिपेयर करिबो with the help of students, right? Collecting material from the immediate environment जहाकू कहा जाए लो कॉस्ट and no cost teaching aids, right? Very less cost re, less effort re, right? And teacher can prepare the teaching aids by collecting equipment, collecting materials from the immediate environment. Okay, for example, if you want to teach 3D shape, you can bring a FT match box. A match ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛେ ଗୋଟେ 3D ସେପ୍ ବା ଯାହାକୁ କିବୋର୍ଡ ବୋଲି କହୁଛେ ନୁହେଁ କି ତେଣୁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସ ଇଜ୍ ଲୋକାଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁଜ୍ଡ ଅନ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ଡ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ସୋ ଅନ୍ସ ଇଭେନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଏ ବକ୍ସ ବାଇ ୟୁଟିଲାଇଜିଂ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିକି ବକ୍ସ ତିଆରି କରିପାରିବା thick paper cutting କରିପାରିବା. Let us discuss examples of learning resources from our immediate environment. କିଛି example ଏଠି ଦେଇଛି ଯେମିତିକି ଆମେ learning resources କେମିତି ଆମେ यूज करि पारुचे by collecting materials from our environment. Okay,
So you may think such learning resources as you plan learning activities. ଏଠି ଦେଇଛି learning resources କଥା କେମିତି ବୁଝେଇଛି ନନ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ ସେକାଣ୍ଡ ଟ୍ରାଞ୍ଜେଣ୍ଟ ସର୍କଲ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଆଣିକି କରିପାରିବା ପିକ୍ଚର ଆଣିକି କରିପାରିବା ନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ନର୍ମାଲି ହେଇପାରେ ତାପରେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କର୍ଣ୍ଣର ଦୁଇଟା କନସେପ୍ଟରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଲାବୋରେଟୋରୀ କହିଲେ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଯୋଉଠିକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ନାଇଁ କି ବା ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିପାରିବା ଯାହା କୁହାଯାଏ ମାଥ ଲାବୋରେଟୋରୀ So laboratory math lab, math corners, ଭିତରେ କିଛିଟା slightly differences ଅଛି in their organization and material purchase. Let us discuss the major differences among them. କ'ଣ difference ଅଛି ଏଠି ଦେଖ mathematics laboratory is a unique room or place with relevant up-to-date equipments known as instructional material designed for teaching, learning mathematics and other scientific or research work whereby a trained and professional qualified persons readily interact with learners on a specific instructions. Total lamba definition ଦେଇଛି. So laboratory is a unique room or place where all the equipments, all the up-to-date equipments are available. Some expert teachers are there, right? They can conduct experiment, they can do some scientific activities. Students can learn by using these activities. ସେଇଭଳିଆ ସ୍ପେସ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ math laboratory, right? So it is a place where learner get opportunity to engage with mathematical object, experiment and mathematical theories, solve mathematical puzzles and problems, play mathematical games, experience hands-on training and so on, right? So material or equipment that found in mathematics laboratory include among others ଯେମିତିକି constructed wooden metal pellet plastic made material mathematical set ଅଛି ଚାର୍ଟ ଅଛି ନୁହେଁ କି ପିକ୍ଚର କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ board, radio, television set, tape recorder, videotape. All these are the different laboratory equipment. Okay, so mathematics consists of a number of materials and objects. Mathematics corner, right? Mathematics corner is a miniature form of math lab. Math lab ro ye gote small कौन part no miniature form of math lab. Math lab is highly organized, consisting of several object material instruments, require specialized skills in developing them, but mathematics corners are simple and contains few mathematical object and items. तामाने math lab भितरे गोटे छोटिया space, right? छोटिया activity, छोटो जिनसटा जाको miniature form रे जोटी की corner होइछि very simple and contains few mathematical objects and items. You can set up a mathematical corner at the corner of any other lab or on the corner of the classrooms. Usually math corner is a place where learner finds the ordinary common kinds of mathematical items and you can utilize these items during the classroom interaction. माने corner रे कोन हो किछि common बुझि परछो ना नहीं common items common teaching learning materials normally थाए जेमति ज्योमेट्री बॉक्स कहउचे different size कहउचे different shape कहउचे ए सब जिंस गुड का अवेलेबल थाए किंतु बड़ बड़ जिंस डिफिकल्ट जिंस कॉम्प्लेक्स जिंस कॉस्टली जिंस these things may not be available in mathematics corner, right? You the things the materials that are very कौन students माने regular use रे आसे ताको हमें mathematics corners बोली कुहा जाय घरे हम जो जिनस रखुचे ताको जो जिनसर यूज बेसी नाही ताको अलगा जगह रहिला जाको हम यूज करछु ताको नॉर्मली अलगा जगह रखुचे त मैथमेटिक्स कॉर्नर इज जस्ट ए कोन पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स लैब where certain ordinary common mathematical items are kept and utilized by the students for classroom interactions. Okay, in way mathematics corner include mathematics related teaching learning aids jaha common teaching learning aids books so reference books so geometry box so right other materials so different models so जहाँकि कॉमनली आमे सब समय रे फ्रिक्वेंटली यूज करि पारु ताको हमें मैथमेटिक्स क्लब सॉरी बोली कहउचे राइट corner कहउचे इट इज टू बी नोटेड ऑब्जेक्ट फाउंड इन मैथ लैब कैन आल्सो बी फाउंड इन मैथ कॉर्नर्स ओके एसब जिनस हुए लेट अस नाउ डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ मैथ लैब्स एंड कॉर्नर जब दुईटा का सेंस रे यूज हुए
दुईटा जाकर ही मटेरियल सब रहे कोठी अधिकार रोचे कोठी कम रोचे कोठी कॉस्टली रोचे कोठी सस्ता रोचे कोटा रेगुलर फ्रिक्वेंटली यूज होची कोटा समटाइम्स यूज होची से सेंस रे डिफरेंसेस अछि otherwise both contents consisting of different resources that are available in both the cases and can be used for students learning. Okay, so now in this point you can see the importance of this club and corners. Okay, it's a importance points of the it helps the learner to comprehend mathematical concept effectively by utilizing concrete object experience real situation. Learner can test and expertise the theoretical knowledge and discover the different mathematical properties. Normally एटा कौन हुए ना theory को practice आमे करू theory को आमे एठी proof करू through different experiments जोटा lab रे available हुए. It enhances student interest and motivations. Math lab provides subjects and materials which help the learner to relate the concept with day-to-day activity and nature. Individuals learning promotes while exploiting math lab as a learner engaged in exploration of mathematical content. Right? ये सब जिनस गुड़िक तार मैथमेटिक्स लैबोरेटरी बा कॉर्नर इंपोर्टेंस कथा डिस्क्राइब करा जाइछि न कि it also develop the skills of inquiry and critical thinking. Principles of learning doing can be practiced by the learner like this. Okay, while developing math lab the following object material equipments can be included. आदर कौन कौन मटेरियल सब रहिबो से गुडको सब देइछि पिक्चर चार्ट गोटे कंक्रीट मटेरियल गोटे weighing and measuring instrument गोटे तादर तुम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट अछि सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट अछि अदर ई रिसोर्सेस अवेलेबल अछि नै कि सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट एंगल मिरर ट्रांजिट प्लेन टेबल अलाइडेड बुझिपारछ ना क्लिमोट्रीज सेंटेक्स विभिन्न प्रकार टीचिंग एड से देइछि कंपास रूलर प्रोट्रैक्टर स्टेंसिल एवडा सब कोन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कंक्रीट मटेरियल देखो बैलेंस अछि बॉल अछि पेडल्स अछि ब्लेड अछि सीसर पिन अबाकस चार्ट पेपर ग्राफ पेपर पिक्चर रे देखो मैथमेटिक्स हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स चार्ट मैथमेटिशियन रे चार्ट बायोग्राफीज ऑफ मैथमेटिशियन these are the different materials may be concrete materials may be picture chart may be weighing measuring instrument drawing instrument survey instrument and other resources that are available in the mathematics lab हैला ए सब mathematics laboratory रो concept तुमको देइछि. Okay, mathematics club and mathematics forum एठी आ गोटे concept पाउछि mathematics club गोटे mathematics forum गोटे similar to math lab और math corner भलिया math club गोटे अछि math forum गोटे अछि is also another important learning resources. NCF suggests that mathematizations of learner through the process as one of the major goal of mathematics teaching रहुछि कोन ना mathematizations करैबा. How do we develop the skills of mathematization among learner? You may motivate the learner to engage math club and forum. तम सेति पई mathematizations develop करिवा पई कि a mathematics club and forum ro importance rohuchi boli described by suggested by NCF 2005. Okay, math club forums are viewed from two angles. देखो एठी कोन a learning resources and as a place to engage learner in extracurricular activities. Mathematics club forum are viewed from two angles. One is a learning resources hisabre and a place to engage learners in extracurricular activities. Learning resources in the sense that mathematics teacher can use mathematics club forum to engage their learners to discuss, debate and deliberate on various topics of mathematics. Right? So learning resources in the sense that learning resources is a way mathematics teacher can utilize club. Learning resource कहूँ माने this forum and club are the learning resources ताकि utilize करि परिबा जे discussion हो debate हो lecture हो topic को पढ़िया पई हो. On other hand, different co-curricular activities like quiz, puzzle, study tour can be organized in mathematics club or forum. दीटा जाकर ए सब जिनस गुडका हुए गोटे करे आमे क्लास करके डिस्कशन करि पड़छे आउ ता संगे आमे किछि extra activity jaha ame कहूचे quiz हो study tours हो that can be organized. Mathematics club forum is a group of individuals
गेटिंग टुगेदर टू ऑर्गेनाइज इवेंट गोटे इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा डिस्कस करवा डिबेट ऑन वेरियस टॉपिक पर्टेनिंग टू मैथमेटिक्स club arranges various events such as birthday of mathematician mathematics day etc also clubs and forum are engaged in organizing discussions debate seminar like this dita ko eka meaning kichi difference nai ultimately mathematics club forum helps the learner in developing interest and motivation in mathematics learning okay there are ways of involving learners in the learning mathematics club and forum plays a major role so math teacher is your duty to initiate progress to develop the math forum and clubs माने गोटे mathematics section गोटे रहिबो टीचर हिसाब रे गोटे math forum बा गोटे club develop करिवे जोटी कि different activities को organize करिवे class करेबे different co-curricular activities करेबे ए सब जिंस करिया पय गोटे forum forum कहले कोन गोटे platform right गोटे गोटे section of the mathematics class को बा mathematics learning को right math clubs work under the guidance of mathematics teacher apart from math club forum are important because of the following reasons कहीं की आवश्यक सब प्रकार जिनस प्रायतः सैया लाभ रो जा इंपोर्टेंस लिखिबो आदर मध्य से जिनस डिफरेंट एक्टिविटीज करबा तांका भीतर इंटरेस्ट मोटिवेशन करबा से माने लीजर टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करि परिबे गेम पजल्स खेलिबे सेठी नै कि लर्नर आर एक्सपोज्ड टू वेरियस एक्टिविटी ऑफ मैथमेटिक्स क्लब फोरम विभिन्न एक्टिविटी थिबो से कुछ मन करि परिबे opportunity to learner to initiate different program को सेठी ऑर्गेनाइज करि परिबे helps the learners to enhance the organize program करछन so it develop the leadership skill problem solving skills joint responsibility hard work like this okay discuss एवडा सब even activities करि परिबे right let us see how mathematics club can be set up केमिति तयारी करा जिवो ता पय एठी लेखिछि how you can develop a mathematics club or forum in the schools right organizations such as blood donation camp eye testing camp एवडा सब करे in such organization we find office bearer and executive committee in similar fashions mathematics club are set up in school mathematics club करा जेंति अलगा उडा करा जाउची for that the initiation must be come from mathematics teacher first initiate नबो हेडमास्टर को कहिबो resources availability को देखिबा टीचर परमिशन देला परे you can develop a mathematics forum right तेनो ता पय मीटिंग करिबा ऑर्गेनाइज करके नॉर्मली करा जाय एट से बुझे जे मैथमेटिक्स क्लब आमे केमती एस्टैब्लिश करि परिबा एवं तादरे को एक्टिविटीज फॉलोइंग एक्टिविटीज गुडिका आमे क्विज प्रोग्राम करछे मैथमेटिक्स फेयर ओलंपियाड ऑर्गेनाइज करछे सेमिनार वर्कशॉप करछे ए सब गोटे सिस्टम रहिबो जो सिस्टम कोन ए सब एक्टिविटीज को कंडक्ट करि परिबा तक मैथमेटिक्स फोरम बोली कहूची यदि गोटे मैथमेटिक्स क्विज कंपटीशन हबो ताले से दायित्व काहा को दिया जिवो ना जो मैथ फोरम अछि से फोरम मैथ टीचर ही ताकू करिवे साइंस वाला करिवे तेनो जस्ट इट इज ए पार्ट इट इज ए डिपार्टमेंट बोली कहि परिबा ऑफ द स्कूल्स राइट दैट एक्चुअली ऑर्गेनाइजेस दिस एक्टिविटीज बुझ परछो ना नहीं Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हला तापर एठी तुमरो आईसीटी कथा देछि इनफॉरमेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रो नीड्स कोन तार इंपोर्टेंस कोन मैथमेटिक्स पढिया पई कि आईसीटी रो केमिति व्यवहार करूचे कंप्यूटर यूज करछे तुमरो ऑनलाइन लर्निंग कथा पढिछि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कथा पढिछि प्रोजेक्ट बनेबा टेक्स्ट कलेक्ट करिबा नाइ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस आर अवेलेबल वीडियो आर अवेलेबल audio available lectures are available right all this can be used even if through chatting method through mail mobile method or social media the knowledge can be shared between the teacher and students right then technology रा सहायता रे आमे केमिति मैथमेटिक्स को लर्न करि पारिबा टीचर जति पढिया कथा पढुचंती किंतु और अनेक पाठ अछि जोटा टीचर सफिशिएंट नुहंती then sethipai we rely on the ICT or information communication technology this information communication technology can support the students learning mathematics okay so ICT is used in the professional development program बहुत कथा दे सब देछि आर भीतर तुमे पढिबो केमती सब एग्जांपल्स माध्यम रे ICT is widely adopted in teaching learning process
Similarly, in case of assessment and assessment evaluation case रे यूज होची multiple tools and software are used no ki for example online testing computer test e portfolio are used to assess माने पिलांकर admission ପାଇଁ ହଉ advertisement ପାଇଁ ହଉ ତାଙ୍କର attendance ହଉ ତାଙ୍କର progress ହଉ ତାଙ୍କୁ variety test କରିବା entrance କରିବା evaluation କରିବା certificate କରିବା ମାନେ ସବୁ କାମରେ normally ICT ଲାଗୁଛି right for assessment purpose. ICT also find application in administration management ରେ ମଧ୍ୟ computerized ସବୁ ହଉଛି storing of students कर data ଯାହା ଅଛି excel sheet ରେ ଆମେ ତାକୁ store କରୁଛେ ପିଲାଙ୍କର detail information management information systems MIS କରୁଛେ are some among them. ICT can be used for professional development programs teacher जो professional development program ଅଛି ନିଜର profession ର competency skills କେମିତି improve କରିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ professional development right development of the professional skills of mathematics teacher ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ we can use ନା ICT. Some of the latest technology ଯାହାକୁ OER କହୁଛେ OER କ'ଣ ଜାଣିଛ open educational resources ଲେଖା ହେଇଛି open educational resources either ତୁମର text ଅଛି video ଅଛି lecture ଅଛି all things are open in the platform online anyone can access it right बेले बेले ओपन एक्सेस थाए बेले बेले किसी लाइसेंस थाए जोटी कि तुमको पेमेंट करके ताको एक्सेस करि परिबो राइट तेन ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस बोली कहा जाए रिसर्च मटेरियल्स लेक्चर टेस्ट वीडियो all are available in the online platforms that can be accessed by students they can learn they can edit they can modify they can share right teacher can use it and the students can also use it ताको हमें OER बोली कहूचे आ गोटे मोक बोली जानिछ massive open online course गोटे डेवलप ହେଇଛି teacher development ପାଇଁ free and open sources software सब अछि assist the various stakeholders to professionally update and help in career development ପାଇଁ online courses are available OER are available mock are available right एगुड़िक सब available अछि to enhance the professional skills development of the teachers okay teaching learning material admission ପାଇଁ यूज होची assessment ପାଇଁ यूज होची professional development ପାଇଁ यूज होची तनु ICT जो यूज कहउचे देखो teaching learning ପାଇଁ e content अछि OER e-learning blog wiki mobile learning interactive whiteboard जो smart board आमे कहउचे नै कि स्मार्ट बोर्ड कहउचे एगुड़के सब इंटरैक्टिंग व्हाइट बोर्ड जेथरे टच स्क्रोल ऑप्शन अछि कंप्यूटर स्क्रीन बेले इमीडिएटली टच करिवो से दिन से तुमरो ओपन हे परिवो राइट एडमिनिस्ट्रेशन डाटाबेस MIS कहउचे रिकॉर्ड कीपिंग कहउचे ए सब दिन सही कहउचे असेसमेंट रे आमे ई पोर्टफोलियो डेवलप कहउचे क्विज करि पाउचे रुब्रिक्स डेवलप करि पाउचे गूगल प्लेटफॉर्म गूगल फॉर्म डेवलप कहउचे ई टेस्ट कहउचे ने विभिन्न प्रकार में असेसमेंट रिलेटेड प्रोफेशनल डेवलपमेंट एगुड़िक सब ऑनलाइन थ्रू रे संभव हो पारुछि जोटा आमे कहूचे जे मैथमेटिक्स पाई ऑनलाइन रे इंपोर्टेंस नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ ICT रा काहे की आवश्यकता अछि से नीड से उडकटी लेखिछि लेटेस्ट ट्रेंड संग्राम को अडॉप्ट करिया पड़िबो कारण सबठी जेहेतु हमर ऑनलाइन अडॉप्टेशन होउछि so at least a math teacher and students should know how to use this ICT right so it has a various numerous applications in the field of education हला एट सब पॉइंट तुमको देछि जे need and importance of information communication technology काहे के इंपोर्टेंस एटा हमर बेनिफिट कोन होउची सब कथा लेठी लेखा आइछि देखो टुडे constructivistic approach of learning is practiced that help the learner to develop their own understanding of the subject based on their previous experiences. In such a scenario, learner need to supplied with multiple sources, preferably digital in nature, as supplement to build their own knowledge and experiences in learning. Knowledge experiences kariba, gain kariba. You want to develop your own understanding. That means you must access to different platforms, different resources, right? You collect different resources, compare different resources, analyze different resources, and you can develop your own understanding of the content, right? तेणु ICT different ways रे हमको हेल्प करछि विभिन्न प्रोजेक्ट बनैया पई हो नोट प्रिपरेशन करिया पई हो टीचर को सपोर्ट करछि स्टूडेंट को सपोर्ट करछि ना कि
বিভিন্ন ওয়েজରେ ବୁକ୍ସ material, text, video, lectures, all are available and the student can access this ICT and they can enhance their learning. Okay, ଏଇଠି ସବୁ ପଏଣ୍ଟରେ ତୁମକୁ ଲେଖିଛି କ'ଣ ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ୟୁର ICT ର ବ୍ୟବହାର। ଓକେ, ଏସବୁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ସବୁଠୁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି ଏସ୍ପେସିଆଲି କ'ଣ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ICT ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଆଗରୁ ପଢ଼ିଲ ଇନ୍ ଜେନେରାଲି ICT କଥା ପଢ଼ିଛେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିସୋର୍ସେସ୍ ପାଇଁ, ପ୍ରଫେସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆସେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ICT ଇନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ସେଠି ସେ ଦେଖେଇଛି। ICT ରିସୋର୍ସ କଥା କହିଛି, ମେଥଡ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ ଦେମ୍ ୱିଥ୍ ଟିଚିଂ ସେସନରେ କେମିତି ICT କୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବ। This include a multiple learning resource technology starting from radio to most modern argumented readily like virtual learning like radio, television, LCD projector, computer, internet, social networking, blog, wiki, discussions forum, mobile learning platform, e-text, e-content କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଇଛି। National Policy on Information and Communication Technology ICT Education ରେ published in the year 2012 and National Mission on Education ICT 2009 have advocated କ'ଣ adoption of ICT in school, right? ICT in school and higher education level. National Policy ICT in school education recommend କ'ଣ web-based digital repository to host a variety of digital content appropriate to the needs of different levels of learner and teachers. National Repository Open Educational Resources is one among them. NROER is a collection of ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି collection of video, audio files, image, documents, interactive modules for all school subject and grades in a multiple language. Different language ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଉଛି ନାଇଁ, ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ଇ ପାଠଶାଳା ଗୋଟେ ଅଛି ୱେବସାଇଟ୍ containing approximately 364 books, 137 videos, 100 audios. Okay, this number is increasing day by day. is another major initiative of e-learning. ତେଣୁ କ'ଣ କ'ଣ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଏଠି ନିଆଯାଇଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ଇ ପାଠଶାଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତୁମର NMEICT ହଉ ବା ତୁମର ଅଦର ରିସୋର୍ସେସ୍ NROER ହଉ ନାଇଁ କି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଥିରେ କି ICTର ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଅଛି ହେଲା। ଏଠି ସେଇ ICT ୟୁଜ୍ କଥା ବିଭିନ୍ନ କଥା ଏଠି ଲେଖିଛି। ଏଠି ସବୁ କ'ଣ ସେଇ ICT କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଆମର କ୍ଲାସରୁମ୍ ସିଚୁଏସନରେ ସେ ICT ଉପରେ ଟପିକଟା କଭର ହେଇଛି। ଦେଖ ଏଠି ସବୁ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ମିଡ଼ିଆ। ଟିଚର ହିସାବରେ ତୁମେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସିଲେକ୍ଟ କରିବ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମିଡ଼ିଆ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ମିଡ଼ିଆ ତୁମ ପାଇଁ appropriate. So when you are selecting an appropriate media, the following factors influence the selections of media. କୋଉ ଜିନିଷ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟା ତୁମକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବ ଯେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମିଡ଼ିଆ। ସପୋଜ୍ ତୁମେ ଅନଲାଇନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଅନଲାଇନ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୁରେ ପଢ଼ଉଛ, ସୋ ନିହାତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ରହିବ ତୁମର ରିସୋର୍ସେସ୍। ସ୍କୁଲ ଯଦି ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିବ, ଫଣ୍ଡ ଦେଉନଥିବ, ସ୍କୁଲ ଲୋକଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଯଦି ଅଥରିଟିର ନଥିବ, ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଇଟ୍, ରାଇଟ୍। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି ଯେ that influence the selection of media. Which media is appropriate to you or appropriate for the students or is influenced by various factors. Okay, what are the task factors? It refers to the nature of the job in hand. That is, what are the learning objectives, what are the behavioral changes that the teacher wish to develop among the learners, what are the pedagogical approaches going to be followed for transacting the curriculum, what time should be devoted for this process. এই ଯେଉଁ ଟାସ୍କ ଯେଉଁ କାମ ରାଇଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ତୁମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍। ତୁମର ଯଦି ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ
एसବୁ जिनस करने ताहले यू डोंट नीड टू यूज द अप्रोप्रिएट मीडिया यू कैन जस्ट यूज द मीडिया ऑफ कौन लेक्चर मेथड राइट दरकार नहीं किसी तेणु तुम यदि चाहूच से भाया जिनस करिकुलम को केमती परफेक्ट ट्रांजाक्ट करी गोटे नुआ मेथड रे पढ़ेबी पिलांकर डेवलपमेंट करेबी नुहे तेणु व्हाट टास्क यू आर गोइंग टू perform that influence your selection of media. If you are interested in various tasks, important tasks, then you must go for the media, otherwise no. Okay. Second one is the learner factors, right? It includes learner kara level ku neiki तुम ICT use करछो if students are not well aware of using technology then this technology use will be meaningless, right? So students interest, their motivation, their characteristic, their personality, their individual difference, willingness for learning, ये सब जिनस important factor that determine the choice of your media. को media रे पढ़ुचो ICT रे पढ़ेबो बा normally पढ़ेबो बा teaching learning material simple तुमे chart map globes use करी पढ़ेबो. So today inclusion emphasizes the classrooms. In such classroom learner will be having certain special needs, right? किछि पिला अछन जहार किछि special needs requirements अछि तांका पई मध्ये हमकु देखिया पड़िबो जे को मीडिया तांका पई दरकार. So while selecting media resources for teaching, care must be taken to meet the learning demands of both normal and special pila. आमर normal पिला अछंती ता संगे special पिला अछंती तांकर requirements दरकार जा कोचे learner factors. This factor influence the selections of your media. Okay. Third factor is your availability factors. जदि सेटा available अछि कि नाही बा economic factors बा resource factors, right? जो टाइम दरकार है एनर्जी दरकार है मनी दरकार है नुहे ए सब जिनसर आवश्यकता निश्चित भाव में दरकार है जदि थिबो देन अकॉर्डिंगली यू कैन सिलेक्ट द मीडिया. ओके एठी गोटे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करके देछि बुझेछि तुमको एठी मीडिया को प्रकार हम यूज करि पारुचे बेसिंग ऑन द सिचुएशंस. ओके let us discuss the practical examples that interconnect all these three factors to teach the concept of bisector of an given angle. ये हला गोटे पाठ ए जिनस को तुमे पढौछ पढेला बेले देख तुमर से तीन टाक फैक्टर आ भीतर लिखा है जे केमिति परस्पर इंटर रिलेटेड रही छी नै कि तेनु से जिनस को से एक्सप्लेन करिछि इन डिटेल्स दैट द फैक्टर्स दैट influence the selection of yeah hala okay let's see. Apart from the above factor you must understand about the concept of technological pedagogical content knowledge known as TPEC बोली कहा जाए गोटे शब्द मन रख technological pedagogical content knowledge, a framework that help teacher to adopt technology in teachings. ये गोटे framework जो कि the teacher adopt technology in teaching. In TPEC, T stands for technology and refers to the knowledge of teacher in technology that he wishes to employ in his classroom situations, right? What are these technology? For example, virtual learning, Web 2, Web 3.0 application, internet, audio clipping, video slot, e-content, interactive whiteboard, OER, ये हला T पाई कौन तुम यूज करछो. P हला pedagogy. Pedagogy represents knowledge of the teacher in pedagogical aspect of teaching. केमिति ताको पढाइबो केमिति बुझाइबो. What are those pedagogical aspects? For instances, the knowledge in various teaching method, technology style, style of teaching, developmental stages of learner. एगुड कहला तुमरो P रे pedagogy aspect. C होची denote for content knowledge means you must thorough about the knowledge. ठीक है ना नहीं तेणु तुमरो टेक्नोलोजी रे यूज दरकार है T दरकार है pedagogical knowledge दरकार है देन देवर सी कंटेंट नॉलेज दरकार है ये सब तीन टा जिनस टी पी एंड सी टी पी एंड सी ताको ए बडा फ्लो फॉर्म लिखिछि टी पैक बोले लिखिछि तो ये सब जिनस आवश्यकता रहउछि तेनो हाउ यू कैन यूज टेक्नोलॉजी हला ए टी पैक कांसेप्ट एट तुमको बुझेछि इन डिटेल्स ए टी पैक फ्रेमवर्क जो टेक्नोलॉजिकल एंड पेडागोजिकल नॉलेज फ्रेमवर्क को केमति एटी एक्सप्लेन करछि आपको के देखिबो. This is a very new concept in pedagogical aspect where we use technology. Okay. Tinta dinse kamti ethi TK, PK and CK content knowledge, technological knowledge and pedagogical knowledge. Tinta ko kamti
कंबाइन करके करा जाई अछि हला सो भेरी डीपर सेंस रे तुम जदि चाहूच इंटरेस्ट अच्छी जानिया ये सब पढ़िले ही तुम्हें डिटेल्स बुझी पारिब concept attainment model एठी देछि काम बोली सीएम concept attainment model the group activity the pedagogical part of tech framework नहीं टेक्नोलॉजी माध्यम रे केम concept development करबे से कथा देछि एलसीडी प्रोजेक्टर पीपीटी प्रेजेंटेशंस हां इत्यादि देछि एठी गोटा किछि डाटा से तुमको देछि एलसीडी प्रोजेक्टर this TPAC framework include LCD, projector, PPT presentation, internet. Some of the picture used for teaching, collection of data are given in the figures. The same pictures can be used during PPT presentation. So the place, till state, till rainfall in meters. माने these things are available in the internet. ने ए जिनस अछि ए को चाहिले तुमे PPT रे प्रेजेंट कर देई पारिबो ଦେଇଛି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କୋଉଠୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ପାଇବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ନଲେଜ ତୁମର ଡାଟା ହେଉଛି ଏଇ ଡାଟା ଦରକାର ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ knowledge about the technology then you can access this data and you can use it in the classroom through the PPT mode PowerPoint presentation mode ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଛି ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ এই ସବୁ ପାଠ ତା ଦେହରେ ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ୟୁନିଟ୍ 8 ଦେଖ ए यूनिट तुमर आसी कोन ना असेसमेंट इन मैथमेटिक्स रे असेसमेंट कोन केते प्रकार असेसमेंट अछि कोन असेसमेंट टूल सब अछि गोटे अचीवमेंट टेस्ट केमति तयारी करिवो कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसी रे कांसेप्ट कोन रोल ऑफ असेसमेंट इन मैथमेटिक्स कोन आ डिफरेंट टूल टेक्निक्स भितर तुमर एठी देछि एवडा हला रिटन टेस्ट ऑब्जर्वेशन एनेक्डोटल रिकॉर्ड चेकलिस्ट रेटिंग स्केल रुब्रिक्स असाइनमेंट प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो नै एगुड सब है असेसमेंट टूल्स मैथमेटिक्स पढ़ेबा संगे मध्य तुमर काम पिला मानकर परफॉर्मेंस को असेस करिया माने मापिबा ओके ए असेसमेंट रे तुमर तीन प्रकार एस्पेक्ट आसे गोटे असेसमेंट माने बुझछ ना नहीं just a collection and a gathering of information by using various testing and non-testing devices right विभिन्न प्रकार टूल्स हम यूज करछे कोठी दरकार ले टेस्ट करछे कोठी ऑब्जर्वेशन करछे कोठी रेटिंग स्केल यूज करछे सो डिफरेंट टेस्टिंग नॉन टेस्टिंग यूज करके डाटा कलेक्शन गैदरिंग करिवार प्रोसेस को हम कहउछे assessment is a very comprehensive terms that include your measurement your evaluation your all other concepts are there okay so in broad sense ram taku use korche assessments in simple sense measuring assessing students performance in learning tinta concept ache uta assessment for learning out assessment as learning assessment of learning okay so assessment for learning it is a form of your formative evaluation ठीक है ना नहीं because this assessment is essential for learning right for example students wants to learn something जदि लर्न करिया पई चाहुचंती ताहले हमकु जानिया को पड़िबो जे प्रकृत रे से पाठ से पढ़ी परिबो कि नाही तार गोटे प्रकार रेडीनेस टेस्ट करिबा तार गोटे प्रकार प्रोग्रेस टेस्ट करिबा जो प्रोग्रेस टा हेल्प करिबो फॉर फर्दर लर्निंग ताको कोचे असेसमेंट फॉर learning right for learning in the sense of your formative evaluations जोटा कि students करो weakness जानिबा students रो strength जानिबा students रो progress जानिबा and which will provides you the कोन हम कहउचे feedback right हमको feedback दबो feedback in the sense student को support करिवो
टीचर को सपोर्ट करिवो पिला मानकर लर्निंग प्रोग्रेस को जानि परिबा आमे स्टूडेंट्स करो स्ट्रेंथ आउ वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करि परिबा जोटा फैसिलिटेट करिवो फर्दर लर्निंग पिलांकर बाय चांस को जगह गोटे समस्या रहउथिबो से समस्या दि आइडेंटिफिकेशन न हबो देन इट विल हिंडर्स फॉर फर्दर लर्निंग फ्यूचर से पढ़ी परिबनी आग पाठ बुझी परिबनी तो एई सेंस रे जो प्रकार इवैल्यूएशन ताको कहा जाए कोन assessment for learning. Okay, to guide the instruction at the process. Okay, it provides feedback helpful for the learner and also teacher, provides opportunity for learner to develop the ability to evaluate themselves, make judgment about their own performance, निजे निजर परफॉर्मेंस जानि परिबे एवं आर लक्ष्य होछि कोन ना लर्निंग रो इंप्रूवमेंट करेगा राइट लर्निंग को एनहांस करेगा सेति पय लिखा है जेति तुमरो कोन ना फॉर लर्निंग ओके आ गोटे हला असेसमेंट आज लर्निंग रे कोन हुए एटा गोटे प्रकार होची सेल्फ लर्निंग प्रोसेस आज लर्निंग सेल्फ लर्निंग प्रोसेस मीन्स सेल्फ रिफ्लेक्शन जा कोचे दैट मीन्स द स्टूडेंट्स असेसमेंट आज ए process of learning through assessment through self question through your self evaluation you can improve your performance no other teachers are there to evaluate your performance right you are engaged in your activity you will find your fault you will find your strength weaknesses right you will know you better you will assess yourself and that assessment will improve your learning okay se sense ta kha jaye assessment as a process of learning through assessment through failure we can stand through mistakes we can learn a sense रे आसे जोटा it is assessment done by the students themselves okay the assessment as सर एटा हाँ जेमति असेसमेंट फॉर लर्निंग ता फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सहित अटैच हाँ माने सामंजस्य रहला एटा असेसमेंट एज लर्निंग ता को इवैल्यूएशन टाइप आज लर्निंग टा एटा होची गोटे प्रकार भाव तुमे सेल्फ इवैल्यूएशंस एठी कोनोसी एक्सटर्नल नुहेंती जे तुमरो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन करिवे एठी तुमे निजे निजर इवैल्यूएशन ही करिवो तुमरो स्ट्रेंथ वीकनेसेस जानिबो कोठी मिस्टेक्स होची काहे कि तुमे बुझी पारुना कोन करि परले बुझी परिबो नै कि तन सेही प्रकार क्वेश्चंस तुमे पचारिबो जहा को हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन बोली कहूचे राइट सेल्फ रिफ्लेक्शन को सेल्फ एनालिसिस करचे सेही दिन से जेमति आमे हमर काम करूचे काम करी 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 आमे मिस्टेक जानुचे मिस्टेक करेक्शन करिके आमे सिखि सिखि जाउचे हमको के बतौनी किंतु आमे निजे सिखुचे राइट इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ लर्निंग इंटरनल इवैल्यूएशन प्रोसेस ओके दैट मींस दे इट बचे awareness of learners regarding how they learns use what awareness to make the necessary adaptations in their learning process से मन अवेयर हेबे जानिबे सचेतन हेबे केमिति हेई परिबो कोन कले हेई परिबो इंप्रूवमेंट देयरफॉर दे टेक एन इंक्रीज्ड रिस्पांसिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग दे आर रिस्पांसिबल फॉर देयर लर्निंग इट इन्वॉल्व सेटिंग निजे गोल ठीक करबा मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस निजे निजे को आगोचन नै मॉनिटर करबा contemplating on the result कोन होची ताको एनालिसिस करबा तेनु गोटा थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस रे दिनस पिला निजे निजे करी करी चलिबो ताको आज असेसमेंट आज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग ओके असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहला को तोर एठी लर्निंग हे गला ए लर्निंग रो परफॉर्मेंस को एठी असेसमेंट करबो जोटा गोटे प्रकार भाव समेटिव असेसमेंट हला जोटा को हमें परीक्षा शेष रे पाठ शेष रे सर्टिफिकेट पई ग्रेड पई फाइनल परफॉर्मेंस जानिबा टोटल प्रोग्रेस जानिया पई कि नॉर्मली करा जाए ताको कहा जाए असेसमेंट फॉर लर्निंग ओके इट हैपेंस एट द एंड ऑफ द लर्निंग व्हिच इज नोन एज योर समेटिव असेसमेंट जो थरे कि हमें पिलां को ग्रेड दउ जो थरे पिलां को हमें सर्टिफिकेट दउ रैंक दउ प्रमोशन दउ इत्यादि राइट सो दिस इज द असेसमेंट ऑफ योर लर्निंग राइट एट द एंड टोटल यूनिट सरला केते तुमे कवर कलो दैट विल बी assessed by whom by your teachers or parents न कि तो एटा होची मध्य गोटे कोन एक्सटर्नल इवैल्यूएशन मनैला आको बाहर लोक इवैल्यूएशन करिवे असेसमेंट फॉर लर्निंग को मध्य एक्सटर्नल इवैल्यूएशन बाहर करिवो किंतु एटा हला गोटे प्रकार इंटरनल इवैल्यूएशन पिला ही करिवो एठी इवैल्यूएटर हला के स्टूडेंट्स एठी इवैल्यूएटर में बी टीचर हियर में बी टीचर parent or other stakeholder or community anything समस्त जानिबे जे पिलार परफॉर्मेंस ओवरऑल ऊपर केते हेछि ए केस रे कह जाय असेसमेंट ऑफ लर्निंग हला तीनटा कांसेप्ट अछि फॉर कहला को ड्यूरिंग द प्रोसेस रे फॉर्मेटिव फॉर्म रे हम करू जोटा हमरो माने इंप्रूवमेंट पई सपोर्ट करे प्रोग्रेस को जानिया पई सपोर्ट करे
किंतु सर्टिफिकेट दिए ना ठीक अच्छे आसेसमेंट आज लर्निंग रे तुम्हें निजे निजे को इभालुएसन करके निजर परफॉर्मेंस को जानिबो स्ट्रेंथ वीकनेस को जानिबो इम्प्रूवमेंट करिबो निजर गोल फिक्स करिबो निजर स्ट्रेटजी डेवलप करिबो स्ट्रेंथ को निजे बचिबो करिबो ठीक अच्छे किंतु असेसमेंट ऑफ होला हळकू टोटल लर्निंग रो एट द एंड रे आमे असेसमेंट करूचे हला ए तीनटा कांसेप्ट असेसमेंट तुमरो नॉर्मली अछि तापरे सीसी कथा तुम जानिच कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कंटीन्यूअस माने कोन रेगुलर इंटरवल रे कंटिन्यू करा जीवो ठीक अछि आमे टर्मिनल नुह जे वर्ष सरीला पाठ पढ़ा सरीला लास्ट को करिबा एमिति नुह तारि भितरे पाठ पढ़ा भितरे कंटीन्यूअसली इवैल्यूएशन शुड बी रेगुलर इन नेचर कंटीन्यूअस इन नेचर जोटि कि आमे कहूचे कोन ना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सिस्टम्स राइट जो थरे के स्टूडेंट्स करा लर्निंग प्रोग्रेस को आमे देखुचे तांकर प्रोग्रेस माध्यम रे फीडबैक पाउचे एवं पिलांकर इंप्रूवमेंट करूचे राइट तेणु जेतेबेले आमे रेगुलर इंटरवल बेसिस रे कंटिन्यू करूचे से कांसेप्ट हला कंटिन्यूअस ओके कॉम्प्रिहेंसिव रो मीनिंग होची कोन ना आमे बाछि परिया तांकर करिकुलर परफॉर्मेंस एकेडमिक याको आमे एकेडमिक परफॉर्मेंस मापुचे ता छडा को करिकुलर परफॉर्मेंस मापुचे नॉन एकेडमिक परफॉर्मेंस मापुचे ठीक अछि तांकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मापुचे तांकर बिहेवियरल डायमेंशन मापुचे सब एस्पेक्ट मापुचे पाठ संगे साठ मापुचे राइट तांकर मैथमेटिक्स रे मार्क मापिया संगे मैथमेटिक्स रे एक्यूरेसी मैथमेटिक्स प्रति तांकर इंटरेस्ट टीचर प्रति एटीट्यूड केते डिसिप्लिन केते पंक्चुअलिटी अलग एक्टिविटी रे कैन पार्टिसिपेट करछि राइट सब दिन सब बेले रेगुलर भाबरे मापिबार जो प्रोसेस तक कुआ जाए continuous and comprehensive evaluation that means we are evaluating students performance regularly and covering all aspects of behaviors not only academic but also non academic right तो ए सेंस रे हमें बुझु जे continuous and comprehensive evaluation very easy concept तुम आगु जानिचो एथरे मध्य आउरी डिटेल्स से बुझेइछि केमती continuous comprehensive एटी करूछि ओके देइछि फॉर्मेटिव केमती करछि एटी सब कंपोनेंट्स ऑफ सीसी देइछि कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्मेटिव समेटिव इवैल्यूएशंस वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज क्वेश्चंस रखि कि हम केमिति विभिन्न प्रकार एक्टिविटी माध्यम रे देखो तांकर लैब रे थिकी प्रोसीजर ऑफ द लैब एक्टिविटी रिकॉर्डिंग वेरीफाइंग लैबोरेटरी एक्टिविटी एवरेज ऑफ 4 एक्टिविटीज 10 विभिन्न प्रकार एक्टिविटी रे हम मार्क के हिसाब करके हम देइछि राइट तो बुझे एग्जांपल देखि किंतु सीसी रो मतलब होचे या जे हमें विभिन्न प्रकार दिग को मापिबा एवं सबले मापिबा क्लासरूम सिचुएशन मापिबा बाहर मापिबा क्लास रे मापिबा क्लास पर मापिबा माने द असेसमेंट प्रोसीजर शुड बी पार्ट ऑफ द होल टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज राइट इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन ए कंडक्टेड इन ए रेगुलर इंटरवल तक हमें सीसी कथा ही कहू ओके तापर एठी अचीवमेंट टेस्ट कथा आसी प्रिपरेशन अचीवमेंट टेस्ट कहले कोन जे तमरो कंटेंट मास्टरी ओके गोटे कंटेंट रे केते मास्टरी हेची गोटे कंटेंट रे केते अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हेची ताकू मापिया पय हम नॉर्मली कोन करू ना रिटन टेस्ट करू जो रिटन टेस्ट माध्यम रे आमे पिलांकर मैथमेटिक्स रो परफॉर्मेंस को मापुची ताकू हम अचीवमेंट माने लेवल ऑफ अटेनमेंट गोटे पिला ए पाठटारे ए यूनिट रे को लेवल पर्यंत अटेन करूची शिकुची जानूची बुझुची नहीं कि ताकू मापिया को आमे नॉर्मली रिटन टेस्ट करछि जोटी कि तुमरो कोन ऑब्जेक्टिव टाइप हेई परे शॉर्ट आंसर हेई परे वेरी शॉर्ट आंसर हेई परे बेले बेले ऐसे टाइप क्वेश्चंस विभिन्न प्रकार रिटन फॉर्म रो क्वेश्चंस देखि हम इवैल्यूएशन करूचे तो अचीवमेंट टेस्ट ताकू सबले पई हम गोटे कोन गोटे रिटन टेस्ट हिसाब रे एक्सेप्ट करू एवं सेठी से देछि केमिति हम गोटे मैथमेटिक्स रो क्वेश्चंस पिलांग पई तयारी करिबा राइट तार पर्पस सेठी देछि to measure whether the students have achieved the objectives of the plan instruction lesson planning objectives थाए पाठ पढ़ार लक्ष्य थाए लक्ष्य केते दूर हासिल हेची पिलांकर पाठ पढ़ार केते दूर आग्रह अछि पाठ को केते दूर से माने बुझिचंती टीचिंग केते दूर सक्सेसफुल हेची न कि ए सब दिनस को से माने को सर्टिफिकेट दबा से माने को मार्क दबा ग्रेड दबा ए सब पर्पस पई नॉर्मली अचीवमेंट टेस्ट करा जाई थाए ओके एटी तुमरो देछि देखो तुमरो प्रिपरेशन केमिति करिवो अचीवमेंट टेस्ट प्रथम प्लानिंग आसे
प्लानिंग रे सेटू प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट करा जाए, प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट आइटम करा जाए, तापर ट्राई आउट करा जाए, स्कोरिंग की प्रिपरेशन आ इवैल्यूएशन करा जाए हैला स्टेप्स गुड सब देछि प्लानिंग द टेस्ट प्लानिंग रे कोन कोन सब करिवो डिसाइड करिवो तुमे को कंटेंट नउचो को कंटेंट रु केते प्रश्न नउचो को ऑब्जेक्टिव्स रु एठी देछि सब देखो वेटेज टू कंटेंट हैला कंटेंट कंटेंट हैला को तुमे डिफरेंट कंटेंट एठी बाचिलो हां ता पई सब वेटेज दबो वेटेज माने बुझछो वेटेज माने परसेंटेज ऑफ मार्क्स कोथरो केते मार्क्स तुमे नबा आदर केते मार्क आदर केते मार्क आदर केते मार्क आदर केते मार्क चारटा टॉपिक बाचिलो वेटेज दबो ता कहले वेटेज टू कंटेंट ओके सिमिलरली तुमर थिबो देखो वेटेज टू कंटेंट देखला एटी नंबर लाइन रु मार्क 15 मार्क परसेंटेज 60% से गुरुत्व देछि पॉलिनोमियल ले 40% गुरुत्व देछि 10 मार्क टोटल हला तुमर 15 10 25 मार्क माने तीटा टॉप टॉपिक से नेला 15 10 25 100 मार्क रु से एटी 60% गुरुत्व एटी 40% गुरुत्व हेले केते 10 मार्क एटी पला 15 मार्क तो एभळे वेटेज नै कि से डिसाइड करछि जे को कंटेंट को केते वेटेज दिया जाए सिमिलरली तुमर ऑब्जेक्टिव्स अछि ऑब्जेक्टिव्स जानछो नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स अछि अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस इवैल्यूएशन टोटली मिसले 100% काहा को केते आधरे 12% आधरे 8% आधरे 24 आधरे 32 आधरे 16 नै कि आधरे 8 से हिसाब रे मार्क से नला 16% 4 मार्क होछि 32 हला को 8 मार्क होछि तुमे भाबो फुल मार्क ठीक केते निया हिछि से फुल मार्क जति नियते फुल मार्क मनकर 50 निया गला तुमे मनकर एठी देला 12% वेटेज ताले केते मार्क 50 रे 12% माने 12 50 60 नुए तो छोटा मार्क तुम एठी नै परिबो एबडी भाबरे तुमरो टोटल मार्क को देखि से कोन एठी केते मार्क रे टोटल 25 मार्क 25 मार्क रो 12% होछि 3 मार्क 25 मार्क रो 8% 2 मार्क न कि 25 मार्क रो 24% जदी करछि ताले से 6 मार्क आछि न कि तो ए हिसाब रे से कैलकुलेशन करके तुमरो याको कह जाय वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स सिमिलरली सेटु निया जाय कोन को प्रकार प्रश्न नउछ ऐसे टाइप रे केते वेटेज नैचो वेटेज गिवन लॉन्ग टाइप रे शॉर्ट आंसर रे 56% ऑब्जेक्टिव टाइप रे 16% टोटल लगाते 100% से हिसाब रे तुम एठी कोन करि परना मार्क डिस्ट्रीब्यूशन करि परियो तो ये हला तुमरो तीनटा डायमेंशंस ठीक अछि ना नै गोटे हला तुमरो कंटेंट हां गोटे हला बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स रे डायमेंशन गोटे हला टाइप्स ऑफ कोन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ठीक अछि ना नै ए तीनटा डायमेंशन को नै कि तुमे जो चार्ट तयारी करिवो ताको कहा जाय तुमरो ब्लूप्रिंट प्रिपरेशंस ओके ब्लूप्रिंट प्रिपरेशन होची गोटे 3 डायमेंशनल चार्ट showing weightage given to different content area different objectives different types of questions बुझला एठी देखो एठी weightage to mark for different forms of questions objective type केते short answer केते long answer केते नै किछि टोटल देखो 25 मार्क रो क्वेश्चन से करछि 22 टा क्वेश्चन तार हे जाउछि को क्वेश्चन केते मार्क नै शॉर्ट आंसर को 2 मार्क मिला 7 टा 14 मार्क हे गेला एठी ला 4 टा लॉन्ग 4 मार्क गोटे मिला 4 मार्क हे गेला ये हे गेला तुमरो गोटे डायमेंशंस राइट तापर छोटो टाइम एस्टिमेशन से करिछि आउट नै जिवो टाइम वेटेज गिवन टू टाइम फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस कहा पई केते समय बांटी टोटली 60 मिनिट रो परीक्षा करूछि तन से हिसाब से करा जाय डिस्ट्रीब्यूट करिछि जे एति समय नेले हमर क्वेश्चंस कवरेज पारिबो तन टाइम टाको नॉर्मली हमें टेबल करू नाहु हमें ताको सेंती लेखु राइट और भी चाहिले डिफिकल्टी लेवल्स तुम नेउछ इजी केते परसेंट इजी क्वेश्चन नबो केते परसेंट डिफिकल्टी क्वेश्चन नबो केते परसेंट एवरेज क्वेश्चन नबो ताको नै कि मध्य तुमको 50 मार्क क्वेश्चन तैयार करे पड़िबो ये सब तक दिन को नै कि सेकंड स्टेप रे तुम तैयार करिवो कोन हम ब्लूप्रिंट होजी गोटे एमिटी चार्ट जो थरे कि तुमरो कोन देखो एठी तुमरो सब तक कंटेंट एठी अछि दीटा कंटेंट विभिन्न नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस इवैल्यूएशन तादरे ऑब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट आंसर टाइप लॉन्ग टाइप पुणे अंडरस्टैंडिंग रे तुमरा आसिला देखो ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर लॉन्ग पुणे आकु भाग होइछ ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर लॉन्ग नै कि त से जो मार्क को आगु जाईछि ताको एमति डिस्ट्रीब्यूट करके यूनिट 1 रे 15 मार्क नि आइतला यूनिट 2 रे 10 मार्क नि आइछि ठीक अछि टोटल ला 25 मार्क को आप केंति बांटी की करा जाईछि तुमे लक्ष्य करो ए को कहा जाय तुमरो कोन ना ब्लूप्रिंट तुम गुड अचीवमेंट टेस्ट तोल तयारी करिवो तुम डिसाइड करिवो जे को कंटेंट नउचे को कंटेंट केते मार्क को ऑब्जेक्टिव्स केते मार्क
को टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रो केते मार्क्स ना कि ए सब को नै कि गोटे ए भलिया कंप्लीट टेबल को प्रिपरेशन करिवा को कहा जाए ब्लूप्रिंट प्रिपरेशंस ओके ए ब्लूप्रिंट तयारी कला परे तापर तुम तयारी करिवो कोन तुमरो प्रश्न तयारी करिवो प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट आइटम्स तेणु तुम देखिल ए सब एति क्वेश्चन आसी बही धरिबो क्वेश्चंस तुम तैयारी करिवो कईटा एसे लिखिबो कईटा शॉर्ट आंसर लिखिबो कईटा लॉन्ग आंसर लिखिबो कईटा ऑब्जेक्टिव लिखिबो ताकू लिखिबो तापर ट्राई आउट आसे ट्राई आउट माने क्वेश्चन ता तैयारी करके गोटे अल्प स्मॉल सैंपल 8-10 जन पिला को भितरे नो क्वेश्चन ता को तुम देकी ताकू ट्राई करके देखिबो क्वेश्चंस केमिति फंक्शन करूची बेले बेले ट्राई आउट रे तुमरो दुई प्रकार ट्राई आउट आसे गोटा प्री ट्राई आउट आसे आ गोटे फाइनल ट्राई आउट आसे प्री ट्राई आउट रे 8-10 जन पिला देखि कॉमन मिस्टेक गुड चेक करा जाए फाइनल ट्राई आउट रे अधिका पिला भाव 100 खंडे पिला को निया जाए तारि पर क्वेश्चन को परीक्षा करा जाए कि देखा जाए जे प्रकृत रे क्वेश्चंस केमिति काम करूची प्री ट्राई आउट रे किछि कॉमन मिस्टेक्स गुड करेक्शन हो जाए तापर ताको एडिट कला परे फाइनल ट्राई आउट रे पूरा परीक्षा करा जाए बुझ परछ ना नहीं परीक्षा करा जिवो जेमति प्रोसीजर हेतिबो करबा कला परे तांका मार्क सब आनिबा से मार्क सब नै कि हम कोन करू ताको इवैल्यूएशन करू लास्ट को जोटी कि हमें आइटम एनालिसिस करू ओके देन गोटे ट्राई आउट कलो तापर को क्वेश्चन उत्तर कोन एक नंबर कोटा दुई नंबर कोटा तीन नंबर कोटा गोटे ऐसे क्वेश्चन केमती लिखिबो केते पॉइंट लिखिबो सेति पई हमें नॉर्मली ऑब्जेक्टिव पई कोन करू ना स्कोरिंग की यूज करा जाए आ जे लॉन्ग आंसर थिबो सेति पई हमें मार्किंग स्कीम गोटे यूज करू जे गोटे ऐसे क्वेश्चन रे एतिकी पार्ट लिखिले एतिकी मार्क आ पई 2 मार्क का 1 मार्क आ पई 1 मार्क टोटली 4 मार्क रे ऐसे पई एतिकी पॉइंट रे केते केते मार्क हमको मिलिबो ता पई गोटे स्कोरिंग मार्किंग स्कीम बा स्कोरिंग की तयारी हुए जहा को कोची प्रिपरेशन ऑफ स्कोरिंग की ओके ए दिन से तुमरो देछि ता छडा एडमिनिस्ट्रेशन केमिति हबो केते समय रे हबो कोन कोन साधारण नियम आसीबो कोन कोन इंस्ट्रक्शंस दिया जीवो पिलांक पई एग्जामिनर पई इवैल्यूएटर पई एडमिनिस्ट्रेटर पई इन्विजिलेटर पई एगुडिक मध्य नियमावली गुडिक प्रस्तुत करा जाई थाए बुझि परछो ना नहीं दैट इज द प्रिपरेशन परे नॉर्मली हमें कोन करू ना इवैल्यूएशन टेस्ट रे इवैल्यूएशन करू ओके एटी सब देछि टेबल सोई वाइज चार्ट एमसीक्यू रो एवरेज रे केते 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 मार्क रो प्रश्न सब नैछि ता डाटा तुमको देछि एते डिटेल्स को जीवनी केवल स्टेप्स गुड को लिखिकी बुझिबो हैला तापर एठी खाली कहि दउछि जेतेबेले क्वेश्चंस को तुम इवैल्यूएशन करिवो जेतेबेले ए जो इवैल्यूएशन ता नॉर्मली गोटे स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे आसे किंतु तुम गोटे कॉमन टीचर हिसाब रे जेतेबेले करूछ सेतेबेले टीचर मेड टेस्ट आसीबो सेठी आइटम को इवैल्यूएशन हमें करूना किंतु एठी जेतेबेले गोटे स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे इवैल्यूएशन आसे सेठी हमें क्वेश्चंस रो कोन डिफिकल्टी हैं लेवल को टेस्ट करू द्वितीय रे हमें कोन डिस्क्रिमिनेशन पावर क्वेश्चंस रो डिस्क्रिमिनेशंस पावर गोटे बाहर करू ठीक अछि आउ कोन इवैल्यूएशन करू ना जो डिस्ट्रैक्टर्स गुड को नै थिबा कहि दउछि टिके टिके डिस्ट्रैक्टर्स माने ए बी सी डी मल्टीपल चॉइस रे सीटा ठीक उत्तर ए बी और डी भूल उत्तर ए चारिटा तीनटा भूल उत्तर रो क्वालिटी केमिति ताकू चेक करा जाय ओके आइटम डिफिकल्टी कहले प्रत्येक क्वेश्चंस रे गोटे प्रकार डिफिकल्टी लेवल थाए क्वेश्चन ता निहाती कष्ट होय नथिबो कि निहाती सहज होय नथिबो बुझि होछि कि नाही क्वेश्चन ता एवरेज ऑर्डर डिफिकल्टी हेतिबो गोटे निर्दिष्ट डिफिकल्टी इंडेक्स आसे सेति पई ता पई मैथमेटिकल कैलकुलेशन सब आसे कोठु आसीबो ना जो पिला तुमरो 100 पिला हम कहिथिले परीक्षा देइचंती ए 100 पिलांकर जो मार्क आसीबो से मार्क रे दीटा ग्रुप बाहर करा जाय ऊपर ग्रुप रो स्कोर पिलांकर मार्क तळ ग्रुप रो पिलांकर मार्क अपर आ लोअर को आ जाय एई मानकर रेस्पॉन्स को नेकी आंसर को नेकी टेस्ट करा जाय जे 11 नंबर प्रश्न केते डिफिकल्ट केते इजी ता पई मैथमेटिकल कैलकुलेशन अछि फार्मूला अछि ताकू यूज करके आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स को कढा जाय बुझिला डिस्क्रिमिनेशन पावर गोटे सेमती क्वेश्चन आसे प्रत्येक क्वेश्चंस पिला को केमती बाछि पारुछि भलो पिला किए गध पिला किए बा पाठ पढिछि किए पाठ पढिनि किए टैलेंटेड किए कम टैलेंट किए एवरेज किए क्वेश्चंस पिला को बाछिबार जो क्वालिटी ताकू कहा जाए डिस्क्रिमिनेशन पावर ओके डिस्ट्रैक्टर्स को मध्य देखा जाए जे ए जो डिस्ट्रैक्टर्स रॉन्ग उत्तर गुड़िक दिया है ऑप्शन गुड़िक एगुड़िक मध्य केते दूर परफेक्ट ए टोटल प्रोसेस को कहा जाए कौन ना आइटम एनालिसिस मन रहा कहा जाए आइटम एनालिसिस प्रॉपर आइटम एनालिसिस माध्यम रे
आमे कौन करि परिबा ना क्वालिटी क्वेश्चंस सिलेक्ट करि परिबा ओके तुम जदि 50टा क्वेश्चन थिबो तुमे आगुरु 120 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन करिथिबो ताकू जते आइटम एनालिसिस करिवो तादर सब क्वेश्चन कटि काटि जिवो फाइनली तुमरो 50टा क्वेश्चन रहिबो राइट ए जो इवैल्यूएशन कथा पड़िला एगुड़िक सब नॉर्मली ए जो स्टेप्स गुड़िक तुमरो गोटे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जहाँ कुआ जाए ताधीरे आसे किंतु इफ यू आर प्रिपेयरिंग ए टीचर मेड टेस्ट ए कॉमन टेस्ट और ए यूनिट टेस्ट right then you can only prepare the blueprint and accordingly you can prepare the test right तो सेही blueprint अनुଯାयी तुमरो देखो examples of an achievement एटी देछि summative evaluation 1 ओके स्कूल ना देला नवम श्रेणी देला नवम श्रेणी रो प्रश्न एटी देछि सेही अनुଯାयी देछि जहा blueprint करछि से अनुযাयी से लेखि सेक्शन 1.5 into 14 मार्क 14.7 मार्क रो से क्वेश्चंस देखो केमती क्वेश्चन सेठी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब देछि हला 2 नंबर रे ट्रू फॉल्स रो क्वेश्चन देछि ओटा क्वेश्चन पेपर आउ तयार करबो आउ कोन हला सेक्शन बी रो क्वेश्चन सेक्शन सी रो क्वेश्चंस एमती करके से 25 मार्क हो 30 मार्क हो 40 मार्क हो प्रश्न तयारी करा जाई थाए बुझियला तनो आकू लॉन्ग क्वेश्चन गोटे देला दीटा देछि गोटे करबो 4 मार्क रो क्वेश्चन एटा करो नहले एटा करो हला ताछड़ा अलगा मार्क रो प्रश्न सब देछि एगुड कहूछि तुमरो अचीवमेंट टेस्ट प्रिपरेशंस ओके तनो सेति पय तुमको प्लानिंग करिवो प्रिपरेशन करिवो ताको किछि आंसर इवैल्यूएशन चाहिए देखि कि क्वेश्चन को इवैल्यूएट करिवो इंस्ट्रक्शन तयारी करिवो तापरे प्रश्न प्रस्तुति करिवो हला एबेला स्टेप्स आसे तुमरो अचीवमेंट टेस्ट कोन एवं ताको प्रिपेयर करिवार स्टेप्स कोन एला गोटे लॉन्ग क्वेश्चंस मने रखि थाओ बुझि परलो यस सर ओडिया रे बुझे देली तुम आराम से बुझ पारिबो हला तापर एटी सब टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट लर्निंग मैथमेटिक्स को असेस करिया पय कोन टूल्स सब यूज करा जाय देखो एटी क्वेश्चंस गोटे टूल्स रे आसी तुमरो क्वेश्चंस आसे ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू चेकलिस्ट रेटिंग स्केल एनेक्डोटल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट एनालिसिस टेस्ट एंड इन्वेंटरीज पोर्टफोलियो एनालिसिस रुब्रिक्स ये सब शब्द गुड़िक भेरी टेक्निकल शब्द असेसमेंट रो अछि ताको बुझिया पई तुम उठके डिटेल सब दिनस ताको पढिले ही जानिबो टेक्निक्स कहले एठी दैछि टूल और टेक्निक्स विथ डिफरेंस अछि टेक्निक्स रे एग्जामिनेशन असाइनमेंट्स क्विज गोटे कलेक्शंस प्रोजेक्ट डिबेट एलोकेशंस ग्रुप डिस्कशन क्लब एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेशन एगुड को सब डिफरेंट टेक्निक्स करा जाय हां आ रिटन टेस्ट रे एठी ऑब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट आंसर टाइप लॉन्ग आंसर टाइप ठीक है प्रत्येक कॉन्सेप्ट एटी तुमको बुझेछि एसो जानिबा दरकार इंटरव्यू शेड्यूल कोन ऑब्जर्वेशन कहले कोन चेकलिस्ट कहले कोन रेटिंग कहले कोन एनेक्डोटल रिकॉर्ड कोन हां ये सब गोटे गोटे टूल्स बोली निया जाई थाए जणा अछि ना नाही कहि सब गोटे गोटे की रिटन टेस्ट दे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हां सिलेक्शन टाइप माने जानछ ना ऑप्शन थिबो हां ऑप्शन आंसर थिबो ताको गोटे गोटे बाछिबो ट्रू फॉल्स हो ये हो एबीसीडी देथिबो बाछिबो ताको आ जाय सिलेक्शन टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन माने गोटे सिंगल उत्तर थिबो ऑब्जेक्टिव माने सिंगल आंसर थिबो स्कोरिंग ऑब्जेक्टिव होथिबो आंसर मध्ये ऑब्जेक्टिव होथिबो सप्लाई टाइप रे कोन हुए ना क्वेश्चन रो उत्तर तुमको लिखिया को पड़िबो सिलेक्शन रे क्वेश्चन तुमको बाछिया को पड़िबो नै विभिन्न प्रकार देछि ऑब्जर्वेशन सब क्लासरूम सिचुएशन टीचर पिला मानकर बिहेवियर को ऑब्जर्व करंती केमिति पार्टिसिपेट करूचंती तांकर लीडरशिप क्वालिटी केमिति अन्य केमिति हेल्प करूचंती केते एक्यूरेटली करूचंती नै नॉर्मल बाय सीइंग पिला को सिंपल क्लासरूम हो लैबोरेटरी हो साइंस मैथ क्लब रे हो ताको सिंपली ऑब्जर्वेशन करिवा त कह जाय ऑब्जर्वेशन मेथड गोटे एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन एक्सटर्नल बिहेवियर को चेक करा जाय सेति पय कोन करा जाय एठी देछि गोटे ऑब्जर्वेशन शेड्यूल इज यूज्ड को प्रकार इंफॉर्मेशन हमर दरकार को प्रकार दिनस हमको जानिया पय दरकार ता पय गोटे प्लानिंग फॉर्मेट को कहा जाय ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बोली ठीक अछि ना नै एठी गोटे एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन शेड्यूल देछि फॉर डिबेट कॉम्पिटिशंस हला 5 मार्क को तुमे दबो डेप्थ ऑफ द नॉलेज ऑफ द कंटेंट ऑब्जर्व कलो एठी दबो 5 मार्क को केते दउछ
strength of the argument टा केते strength to convince, fluency, diction, pronunciation आ ऊपर point अछि, ability to contradict the given point of view, respectful to the opponent, ability to take criticism positively, body language while arguing, ये सब तक स्कोर आउट ऑफ 5 रु तुम एठी दब 5 रु एठी 2 दब एठी 1 दब एठी 3 देई परिबो एठी 4 देई परिबो एठी 2 देई परिबो एठी 1 देई परिबो नो ए बड़ी भाबरे आउट ऑफ 5 रु यू कैन अलॉट द मार्क्स एटा को जाय ऑब्जर्वेशन शेड्यूल माने को दिन से ऑब्जर्व करछ ताको लेखि के रखिबो त करिवो आ गोटे कांसेप्ट एनेक्डोटल रेकॉर्ड जानछन नै रेकॉर्ड होची गोटे टीचर प्रिपेयर करिवे कोनोसी गोटे बिहेवियर जदि छुआंकर ऑब्जर्व करंती टीचर तार गोटे डायरी गोटे डेस्क्रिप्शंस देबे डेस्क्रिप्शंस को लिखिबे पूरा डायरेक्टली लिखिला पर ताको एनालिसिस करके गोटे रिजल्ट बाहर करिवे राइट एठी गोटे डेमो तुमको देछि एनालिटिकल रेकॉर्ड एठी ऑब्जर्वेशन डिटेल्स कोन टीचर ऑब्जर्व कले एठी लिखिछि अंकिता हैड डेवलप्ड द कांसेप्ट ऑफ नेचुरल नंबर होल नंबर एंड रेशनल नंबर शी लिस्टेड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 ru 2 and realized that in fact there are infinite many rational numbers between 1 and 2. She concluded that in general there are infinite many rational numbers between any two given rational number. She drew the numbers line and showed the numbers on the number line. एतिक जिनस टीचर ऑब्जर्व कले एताको नोट करके लिखिले राइट एयाको नोट कला परे टीचर सेउथरु आइडिया करके तांकर एनालिसिस रेटी बाहर करछन्ती कोन अंकिता वाज एबल टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम शी डेमोन्स्ट्रेटेड कॉन्फिडेंस इन ड्राइंग द नंबर लाइन अंकिता वाज एबल टू शो एनी नंबर ऑन द नंबर लाइन ए सब दिनस अंकिता करि परुछि बोली सी एनालिसिस करके बाहर कले त एनेक्डोटल रेकॉर्ड होछि गोटे रेकॉर्ड जोटा टीचर निजे कोन करंती ना ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करंती डायरी लिखंती ताको एनालिसिस करके आंसर को काढंती बुझ परछो ना नहीं यस सर एटा होची एनेक्डोटल रेकॉर्ड रा मीनिंग चेकलिस्ट कहले कोन से गोटे ये होची गोटे ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स राइट आदरे कोन हुए ना विभिन्न प्रकार कोन से गोटे एस्पेक्ट हम जानिया पई चाहिले विभिन्न प्रकार स्टेटमेंट सब लिखा आइची ए स्टेटमेंट यस नो रे आसे ए स्टेटमेंट जदी पिला के एप्रोप्रिएट होची तुम यस मारिबो जदी नुहे ताहले नो मारिबो बुझियला आको चेक लिस्ट किछि लिस्ट अछि तुमको से लिस्ट रो तुमको चेक करे पड़िबो whether the particular quality is present or absent example देइ छेठी did the learner accept challenges in problem solving willingly प्रकृतरे willingly से चैलेंज को एक्सेप्ट करूची कि नाही यस करूची did the learner apply knowledge learned from previous learning text तर एप्लीकेशन एबिलिटी अछि कि नाही कहले नाही से पढुची किंतु अप्लाई करि करूनी तन मु एठी टिक मारिबी did the learner reason and explain appropriately explain करि परछन नाही कारण खोजी परछन नाही यस से करि परछि ठीक अछि did the learner see and organize the relationship and make connection ए एबिलिटी ता पकर करछन नाही जदि यस ताले नो यस मारिबी जदि नो ताले नो मारिबी बुझला एमति किछि लिस्ट थाए नॉर्मली बनै थाउ ताको हम एठी चेक करू ये गोटे प्रकार कहिया गले ऑब्जर्वेशन शेड्यूल जोथरे कि यस नो रे उत्तर आसी थाए हला आकोजे चेक लिस्ट आउट आसे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ चेकलिस्ट होची तुमरा रेटिंग स्केल्स जेंति कि हमें कहचे पास न हले फेल पास फेल हला को 30 रु 100 भीतर रखले पिलाटे पास करछि जदि एठी बिलो कते 30 रखुछि ताहले फेल होछि जदि से पास करछि ताहले को भलिया पास करछि ताको हमें विभिन्न रेटिंग रे करि परिबा जे मु कहिबी जे से 80 रु 90 100 भीतर रखुछि कि 60 रु 80 भीतर रखुछि कि एठी 40 रु 60 भीतर रखुछि कि एठी 30 रु 40 भीतर रखुछि ठीक अछि ना एमति जदि मु डिफरेंट वैल्यू एठी दउछि ताहले मु एठी ए ग्रेड एठी बी एठी सी एठी डी देई परिबी एठी 5 मार्क एठी 4 मार्क एठी 3 मार्क एठी 2 मार्क जदि से पास होछि को एक्सटेंट रे पास करछि बुझि परछो ना तो सेति पई हम एठी कोन कर डिफरेंट रेट वैल्यूज बोली को जाय सैटिस्फैक्शन गोटे लेवल मु कहूछि सैटिस्फैक्शन तने जने केते सैटिस्फाइड पूरा पॉजिटिवली फुली सैटिस्फाइड कि पार्शियली सैटिस्फाइड कि मॉडरेटली सैटिस्फाइड कि नॉट सैटिस्फाइड तो सैटिस्फैक्शन को हम डिफरेंट लेवल तक आ जाए डिफरेंट लेवल्स रे स्कोर करबा को कहा जाए रेटिंग डिफरेंट रेट वैल्यूज एक्चुअली दिया जाए राइट एठी गोटे देइछ एन एग्जांपल्स ऑफ रेटिंग स्केल्स फॉर एक्सपेरिमेंट वर्क इन ज्योमेट्री गिवन बिलो
गोटे जियोमेट्री रेटिंग वैल्यू देछि देखो एठी सब एठी गोटे रेटिंग लेवल ऑफ मास्टरी नेवर समटाइम्स जनरली मोस्टली ऑलवेज जदि एक्टिविटी देखुचे ताले एठी 5 मार्क से पाइबो ठीक अछि एठी जे देखलो समटाइम्स एटा आसी ताले एठी 2 मार्क एठी देले एठी जदि आसुची जनरली नॉर्मली आसी 3 मार्क देले तनो एठी सब देखा है देखो ए सब लिखा है ए एस्पेक्ट लर्नर हैज अंडरस्टैंडिंग ऑन ज्योमेट्रिकल शेप नेवर ना समटाइम्स बुझी पारछि ना जनरली बुझी पारछि ना मोस्टली बुझी पारछि हां मान मैक्सिमम एंड ऑलवेज बुझी पारछि जदि ऑलवेज बोली फील करछि तालो वी कैन पुट हियर 5 मार्क्स बुझुछ ना नहीं तेनु से ज्योमेट्री कांसेप्ट बुझिबारे किछि एठी डेवलप हेछि किछि पॉइंट्स किछि स्टेटमेंट एवं तार डिफरेंट रेट वैल्यूज देखो एठी तार रेट वैल्यूज ए गुड सब दिया है बुझ परछो ना नहीं इट इज योर रेटिंग स्केल्स learner identify geometrical shape including circle cone cube hexagon ए geometrical figure गुड आइडेंटिफाई करि पारुछि से जमा करि पारुनी कि बेले बेले करूछि कि नॉर्मली करूछि कि मोस्टली करूछि किंबा ऑलवेज करूछि तन कोन टाइप चेल करूछि सो यू विल ऑब्जर्व एंड पुट ए मार्क हियर रेट वैल्यू हियर एक कह जाय रेटिंग बोली ठीक अछि तन ये रेटिंग मध्य गोटे प्रकार तुमरो कोन स्कोरिंग प्रोसीड्यूर आ गोटे कांसेप्ट आसे रुब्रिक्स हां रुब्रिक्स जेतेबेले किछि असाइनमेंट वर्क थाए किछि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड थाए राइट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो गोटे एक्सपेरिमेंट करू कि गोटे प्रोजेक्ट करू ए प्रोजेक्ट एक्टिविटी जदि से करूची ता धरे विभिन्न एस्पेक्ट को मध्य आमे आरि भलिया देखुचे ठीक अछि ना नहीं केते एक्यूरेटली करिछि केते रिलेवेंस अछि केते नीटली करिछि केते भलो भाबरे एक्सप्लेन करि पारछि तो ये सब डिफरेंट डायमेंशन को बाछिबो ता पई आमे सब कोन मार्क अलर्ट करू 5 मार्क को आकु केते दबा एक को केते दबा पिले सब भलो करछि किंतु ताक पचारला से किछि बुझेई पारुनी ता मन तर एक्सप्लेनेशन एबिलिटी नाही तो को डायमेंशन रे आमे ताकु केमिति असेस करबा केमिति मार्क्स दबा राइट एकु को आमे स्कोरिंग करिया पई कि जो गाइडलाइंस डेवलपमेंट हुए स्कोरिंग गाइडलाइंस that describe the performance of the learner okay is known as your rubrics as learner demonstrate the performance it is appropriate to assess the performance using a rubrics it is generally used to assess the performance task and open questions generally a typical rubrics it contains a scale of points to be assigned for example 1 ru 4 scale describe the characteristic of a response for each possible scores an example of rubrics in mathematical projects is given here देखो मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट गोटे रुब्रिक्स से देछि पिलार ना लिखाला क्लास लिखाला टीचर ना लिखाला को सेक्शंस लिखाला समिशंस ऑफ टाइमलाइंस देछि एठी सब पॉइंट देछि आर भीतर कोटा तंक पय फिट होछि कंप्लीशन गोटे डायमेंशन क्राइटेरिया नेला all part of the project are completed neatly and correctly जदि करूछि तमे 84 मार्क दबो जदि all part of the projects are complete करिछि पूरा neatly and correctly आ खाली कंप्लीट करछि आ some part of the project completed जदि करछि 2 आ एठी जदि few to no part किछि सेमति खास करिनी ताहले हम एठी 1 मार्क देले बुझि होछि एक्यूरेसी केते परिमाण रे एक्यूरेसी अछि each step of the project was followed and was correct जदि हला 4 मार्क one step of the project was incorrect ओटा किछि भूल हेले 3 मार्क several step of the project contained error बहुत जगह मिस्टेक्स उडे अछि तेनु तक 2 मार्क राइट entire project was incorrect totally सब तक भूल अछि ताले 1 मार्क बुझला त ए गुड के सब क्राइटेरिया ए गुड के सब ताला हला स्कोरिंग पॉइंट याकू कहा जाय तुमरो कोन ना रुब्रिक्स बुझ आइडिया पाउछो ना नहीं परफॉर्मेंस टास्क को हमें देखुचे डायग्राम डायमेंशन जो देखुचे ए डायग्राम टा केमिति आसी करिछि ताकू देखि कि करा जाय तने एम्ति हमें जत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टास्क को हम इवैल्यूएट करू ए भलिया रुब्रिक्स हम नॉर्मली यूज करी थाउ ओके असाइनमेंट रो कांसेप्ट बुझछो माने जानिछो असाइनमेंट यूज्ड फॉर बोथ लर्निंग एंड इवैल्यूएशन पिला शिक्षा पय यूज करा जाय एवं इवैल्यूएशन पय नॉर्मली यूज करा जाय तने पिलांकर असाइनमेंट्स जो हम अलर्ट करू टास्क अलर्ट करू करकी से असेसमेंट खाता को मध्य इवैल्यूएशन करके मार्किंग दिया जाय जेमति कि तुमे इग्नोर असाइनमेंट दउछो टास्क तुमको दिया जाउची तमे तार आंसर दउछो
that is evaluated by your counselor or evaluator and provides feedback, and that feedback can modify your performance, right? This assessment is also assignment can also be used as a as a evaluator tools. Okay, it would example ଦେଇଛି, topic ଦେଇଛି, assignment ଦିଆହେଇଛି, specific expectation learner ପିଲା କ'ଣ ଲେଖିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ expect କରୁଛେ ଭାବୁଛେ ତାକୁ ଏଠି ଦେଇଛେ, ତାକୁ ଦେଖି କରିପାରିବା। Similarly ପିଲାଙ୍କର project ଯୋଉ ଅଛି project କୁ ମଧ୍ୟ evaluation କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାର୍କ କରିପାରିବା। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୁ ମାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଅରିଜିନାଲିଟି, ଏସବୁ ଲେବୁଲରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କିଂ କରିକି ଏଇ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରପରଲି ଇଭାଲୁଏସନ କରିଦେଇ ପାରିବା। ଖାଲି ଟାସ୍କକୁ ଦେଖିଦେଲେ ହବନି, ତାକୁ ଆମେ କରୁଛେ। କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଦେଖ ଏଠି ହାଇ, ଭେରି ହାଇ ଅର୍ ହାଇ, ମଡରେଟ୍ ଅର୍ ଲୋ ଯଦି କରିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେଟା କେତେ କ୍ରିଏଟିଭ ୱେଜରେ କରିଛି, ସେ କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିଛେ। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ କେତେ ୱେଜରେ କରିଛି, ଅରିଜିନାଲିଟି ତା ଦେହରେ କେତେ ଅଛି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେତେ ଆକୁରେଟିଭ ପ୍ରିସାଇଜ ଅଛି, କି ସେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଇନାହିଁ, କି ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ ଅଛି, କି ତାର କ୍ଲାରିଫିକେସନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ନାହିଁ, ନୁହେଁ? ବିଭିନ୍ନ ଲେବଲରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁ, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦଉ। ଓକେ, ଏସବୁ ହେଲା ତୁମର ପାଠ। पोर्टफोलियो गोटे, पोर्टफोलियो माने जानछ ना नहीं? पोर्टफोलियो माने तुमे तुमर जो सिलेक्टेड कौन सिलेक्टेड अचीवमेंट, सिलेक्टेड टास्क, सिलेक्टेड जहाँ जहाँ तुमर डिटेल्स को प्रेजेंट करने को कहा जाए पोर्टफोलियो। जमती कि फेसबुक रे तुमे तुमर स्टेटस अपलोड करछो, कौन खाइल, कौन पिंधिल, कुआडे बुलिया को गलो, हाँ मान डिटेल इनफॉरमेशंस को शेयर करवा। पोर्टफोलियो होते एमडी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया रे नॉर्मली आमे करू निजर अचीवमेंट, निजर सक्सेस, निजर फेल्युअर्स, निजर कोटी पार्टिसिपेशन करछो, कौन कौन तुमर कोथरे इंटरेस्ट अछि, तुमर लाइफ तुमर स्पेशलाइजेशन कोठी अछि, तुम जीवन रो लक्ष्य कौन नहीं कि डिटेल इनफॉरमेशंस जोटा को सिलेक्टेड आर्टिफैक्ट्स बोली कहा जाए। माने तुमर सिलेक्टेड अचीवमेंट्स कोटे अवार्ड पाइछ मन करा जाओ, कोटे सर्टिफिकेट पाइछ कि कौन पाइछ, ये सब तक जिनस को रिप्रेजेंट करिवार गोटे प्लेटफॉर्म जहाँ को कहा जाए कौन पोर्टफोलियो। दैट विल गिव ए डिटेल इनफॉरमेशंस, डिटेल आइडिया अबाउट योरसेल्फ, राइट, रिगार्डिंग योर ऑल एस्पेक्ट्स, योर पर्सनल हो, तुम एकेडमिक हो, तुम प्रोफेशनल हो, राइट, सब जिनस को रिप्रेजेंट करिवार गोटे प्लेटफॉर्म ताको कहा जाए पोर्टफोलियो। इट इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ वेरियस आर्टिफैक्ट्स ऑफ ए पर्सन्स। ओके, मनकर भल गोटे फोटोग्राफी जने कर फोटोग्राफी तार डिजिटल मीडिया रे से तार डिटेल सब छाड़ी, घर द्वार ऑफिस कोटी कौन केते वर्षर एक्सपीरियंसेस, कौन कौन काम करछि, को जगह भल काम करछि, तार डिटेल्स डिस्क्रिप्शन से दे परिबो, तार विभिन्न फोटो को सेठी शेयर करि परिबो, नो सर्टिफिकेट जति अवार्ड पाइछि ताकू शेयर करि परिबो। ए सब जिनस करिवो कले कौन हम ना बाहर पब्लिक यूज हो पारे, पब्लिक लोक जानी पारे जे लोक पाखे कौन क्वालिटी अच्छी ना कि तेना एक्जाक्टली से मीनिंग को तुम्हें धर से पोर्टफोलियो आमे पिला निजे करें, टीचर मध्य करें। विभिन्न विशिष्ट लोक डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, से पोर्टफोलियो लिस्ट अच्छी, राइट, ताको देखिले पब्लिक जापर हाँ लोकटा पाखे ये टैलेंट अच्छी, आमर लोकटा दरकार गोटे लेक्चर हो, गोटे काम हो, सो दे कैन हायर हिम। ओके, तेणु दिस पोर्टफोलियो इज जस्ट ए मन रख ए कलेक्शंस ऑफ आर्टिफैक्ट्स, achievements, all these things that can be represented in a platform. Okay, तेणु से प्लेटफॉर्म तुमरो नॉर्मली कौन बेसिकली आमे ताकू डिजिटल प्लेटफॉर्म बोली करि पारे किंबा तुमरो बुकलेट आकार रे करि परिबा। यदि आमे पिलांक कथा कहूचे तार नॉर्मली से माने बुकलेट जरिया रे गोटे प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरिया रे से सब करंती, कंटिन्यूअसली जहाँ जहाँ अचीवमेंट करछंती ऐड करंती, राइट, कोथरे इंटरेस्ट अच्छी, कोठे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करछंती, को क्लास रे पढुचंती, कोठी कोन पाइचंती, कोठी खेलिचंती, नुहे डिटेल जिनस को से माने कंटिन्यूअसली अपडेट हे कि जाए, जो सेंस रे विभिन्न प्रकार पोर्टफोलियो एक्चुअली अच्छी। एटी डिटेल्स किछ देइनी, सिंपल कांसेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो देइछि। ओके, टीचर चाहिले he can develop his own portfolio, students can develop their own portfolio, so this portfolio, this collections can be assessed or can be evaluated। जेमती पिलांकर होमवर्क कॉपी को हम इभालुएट करूचे,
ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ୱାର୍କ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରୁଛେ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରୁଛେ ସିମିଲାରଲି students may prepare a portfolios and that portfolio can be evaluated ହେଲା ତେଣୁ ଆର ଯୋଉ benefits ଅଛି ଏଠି ଲେଖିଛି following points must be remembered while using portfolios. Okay, so this is your task. Assessment of learning of mathematics children with special needs. एवढा तुम पढ़िब मो पढ़ौनी स्पेशल नीड्स पिला जदि किछि अछंती जदि स्लो लर्नर अछंती लो विजन अछंती हियरिंग इम्पावरमेंट अछंती ब्लाइंडनेस पिला अछंती सेमानकु केमिति इवैल्यूएशन करिवो कारण इनक्लूसिव सिचुएशन रे आमे जानुचे जे पिलांक भितर मध्य किछि डिजेबिलिटीज थाए को माने स्लो लर्नर थांती को मानकर लर्निंग डिजेबिलिटीज प्रोब्लेम थाए पढ़िबारे हो लिखिबारे हो कैलकुलेशन करिबारे हो नुहे डायसकाल्कुलिया बोली कुआ जाए सेमानकु आमे केमिति असेसमेंट करिबा सेमानकु केमिति इवैल्यूएट करिबा जो मानकु देखा जाउनी भले कि ब्लाइंड पिला अछंती बा पार्शियल ब्लाइंड अछंती जार स्लो लर्नर आईक्यू कम अछि सेमानकु केमिति करिबा किछि एमआर पिला जदि अछंती सेमानकु केमिति करिबा तेणु डिफरेंट स्पेशल पिला जो अछंती सेमानकु इवैल्यूएशन करिवार प्रोसीड्यूर तुमरो एठी एक्सप्लेन करा जाई अछि ओके ए सब जिनिस को तुमे निजे पढ़िबो आउ एठी किछि पढ़ौ नाही एति कि तुम कहूची एठी आसे तुमरो देखियो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर माने कोन गोटे मैथमेटिक्स टीचर केमिति निजे को डेवलपमेंट करिवो तेणु आर मीनिंग होची कोन सिंपल सेंस रे बुझिले जे प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहिले प्रत्येक पर्सन तांगा प्रोफेशन रे थांती से प्रोफेशनल इंप्रूवमेंट आवश्यकता हुए कारण आमे जो ट्रेडिशनल नॉलेज हम पाखरे अछि दिस ट्रेडिशनल नॉलेज मे नॉट बी sufficient in the present context right societies go on changing there is a continuous tremendous changes takes place in the society in the teaching in the learning in the subject in the content okay new innovation new advancement new knowledge have been explored okay so a teacher should be acquainted with the present trends present issues present program present recommendations right तेणु टू मेक टीचर कौन मेक टीचर अप टू डेट है और अपडेट हाँपाई निश्चित भाव में ताकू सब जिन जानापी दरकार तेणु ये गोटे कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस रे जिते टीचर निजी को डेवलपमेंट करुच्ची कौन ना तार स्किल्स तार नॉलेज तार कॉम्पिटेंसीज राइट ए सबूर इम्प्रूवमेंट करिवार प्रोसेस को कहा जाए professional development okay that is a continuous professional development a teacher should be a continuous learner should be acquainted with all the latest varieties of development ना कि ये सब जिनसे संगर अभ्यस्त हवा तो ये जो प्रोसेस रे टीचर निज को इक्विप करि परिबो निज को ग्रो करि परिबो निज को डेवलपमेंट करि परिबो से प्रकार प्रोसेस को कहा जाए प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो काहे कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट दरकार मैथमेटिक्स टीचर कहीं कंटिन्यूअस पढ़ा दरकार कथा देछि आकु करिया पई कि कोन करा जाई पारे सेमिनार अटेंड करि परिबो कॉन्फ्रेंस जाई परिबो ऑनलाइन शेयरिंग कम्युनिटीज उटे करि परिबो मेंबरशिप प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन रो मेंबरशिप हे परिबो जोथरे कि विभिन्न प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हुए ताको अटेंड करि परिबो सेमिनार जानुच कॉन्फ्रेंस अटेंड करिबा ऑनलाइन माध्यम रे मध्य डिफरेंट ऑनलाइन शेयरिंग कम्युनिटी ग्रुप करके हमें चाहिले कोन हम परस्पर भितर शेयरिंग करके निजको ज्ञान बढ़ाई पारिबा राइट तो ये सब कांसेप्ट गुडे देछि वेरी इजी कांसेप्ट यू कैन लर्न दिस सेमिनार कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन कम्युनिटी सो ऑल आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑनलाइन लर्न रे पढ़ी परिबो एक्सपीरियंस रे सिखिबा डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करि परिबा न कि जमरो ग्रुप जो अछि ग्रुप रे मध्य अनेक इन्फॉर्मेशन पाइबा लेटेस्ट ट्रेंड विषय रे जानिबा तो निजे निजको केमती मैं इम्प्रूव करि परिबो गोटे साइंस टीचर्स राइट सेतिपई ही हैज टू rely to go for attending this conferences seminar or he can also access to online platform right तादर विभिन्न लेक्चर्स रहउची टेक्स्ट रहउची कंटीन्यूअस लर्निंग प्रोसेस रे जने चाहिले निजे के इंप्रूवमेंट कर दे पारिबो तापर एट एक्सप्लेन करथिबो टीचर एज ए कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स भितर टीचर लर्नर कम्युनिटी भितर से गोटे पर्सन बोली डिफाइन करछि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट निजे निजको रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस माने टीचर निजे केमती निजको सेल्फ इंप्रूवमेंट करि परिबो राइट
इम्प्रूवमेंट करिवार बाट निजे खोजिबो एवं ये करिवो हला ए कांसेप्ट देइछि टीचर एज ए रिसर्चर माने एठी तुमे पाइबो गोटे कांसेप्ट तुमरो एक्शन रिसर्च एवरी टीचर इज ए रिसर्चर रिसर्च माने इन्वेस्टिगेशन करिबा जानिबा खोजिबा पाइबा सिखिबा एई भलिया कंटीन्यूअस प्रोसेस रे आमे सिखि सिखि चालू राइट प्रॉब्लम को देखिले प्रॉब्लम को सॉल्यूशन खोजिले कारण खोजिले ताको इम्प्लीमेंट कले देखिले कौन रिजल्ट बाहर जोटा को वेरी एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च बोली तुमरो कुआ जाए तुमरो गोटे अछि एक्शन रिसर्च ऊपर टॉपिक अछि ताको मध्य तुमे आगु को पढिबो राइट सो कंडक्टिंग एक्शन रिसर्च इन मैथमेटिक्स बुझिउ जने किछि पिलांकर क्लास रे तुमे देखिलो चारि पांचटा पिलांकर प्रॉब्लम रहउची सेठी तुमे कहिबो प्रॉब्लम को एठी आइडेंटिफाई करिवो हैला प्रॉब्लम काहे कि हेछि ता कारण खोजिबो भाबिबो तापर सेठु किछि प्रकार एक्शन हाइपोथेसिस नबो हाइपोथेसिस माने प्रोबेबल सॉल्यूशन जदि ए कारण ता पय कोन मेडिसिन्स तापर सेठु कोन करिवो ना इम्प्लीमेंटेशन करिवो ए हाइपोथेसिस जो मेडिसिन नेकिछ जे एम्ति कले पिलांकर बढ़े मु जदि तांकू गोटे घंटा नखा डेली प्रैक्टिस करूची ताहले पिलांकर इंप्रूवमेंट हबो बोली भाबुचो ताहले तुमे तांकू गोटे घंटा नखा डेली प्रैक्टिस करिवो हैला करि चललो 8 दिन पय तापर तांकू पुण सेठु टेस्ट करिवे इवैल्यूएशन करिवो कला पर देखिबो तांकर इंप्रूवमेंट हैला कि नाही नै कि तेनु जते आम पाखरे कोनोसी समस्या आसे समस्याटा आमे निजे चिंता करू केमिति सॉल्व हबो आमर ओन एक्सपीरियंसेस ओन नॉलेज ओन एफर्ट रे कम समय रे सॉल्यूशन करिवा समाधान करिवार बाट खोजिया को कुआ जाय एक्शन रिसर्च इट इज वेरी इमीडिएट रिसर्च which requires very less experiences less knowledge less training and less times anyone can conduct research any professional persons who is in his field तुमे गवेषणा करछ मु गवेषणा करछि गोटे कारपेंटर गवेषणा करछि गोटे प्रैक्टिस डॉक्टर प्रथम एमबीबीएस पास करके आसी के मेडिसिन दउछि से मध्य कोन तार प्रैक्टिस भितर सिखुछि तेनु गोटे प्रोफेशनल फील्ड भितर जने रहि कि निजे निजे को इंप्रूव करिबा समस्या को खोजिबा समस्या समाधान करिबा पय चेष्टा करिबारु सिखिबार जो प्रक्रिया भाव ताकू कहा जाए एक्शन रिसर्च सो एवरी टीचर इज ए एक्शन रिसर्चर्स न कि तो एठी प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्शन रिसर्च कंडक्टिंग एक्शन रिसर्च इज आल्सो ए मीन्स फॉर इंप्रूविंग वंस प्रोफेशनल स्किल्स ठीक है ना नहीं तो यही प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर ए पेज को तुम जीव तार देखिबो ए सब कांसेप्ट गुड एक्सप्लेन हेछि केमिति गोटे टीचर निजर प्रोफेशनल स्किल्स कॉम्पिटेंसी टैलेंट को कंटीन्यूअस प्रोसेस रे विभिन्न माध्यम रे इंप्रूवमेंट करे दे पारिबो ओके so all these things are explained in your unit 9 जानि परछो yes sir हला ए हला तुमर पाठ वेरी इजी पाठ खाली तुम रीडिंग करी करी जीव जदी ए यूनिट 9 बुझिबार किछि असुविधा हबो नाही ता छडा तुम बेसिक दिन से कहि देली एक्शन रिसर्चर माने कोन रिसर्चर हवा दरकार नाही जे निहाती एक्सपर्ट है तो गवेषणा करिवे से दरकार नाही समस्ते जे रोसई करछि से भी रोसई केमिति इंप्रूवमेंट हेई परिबो टेस्ट एबे भलो हेनी केमिति भलो टेस्ट हेई परिबो कोन कमिया रहिला पुणी एक्सपेरिमेंट करिबा एमिति कंटीन्यूअस प्रोसेस रे हमें सिखु ए सिखिबार प्रोसेस ही प्रकृति रे एक्शन रिसर्च ओके तेन गोटे कॉमन क्लासरूम टीचर पाठ पढाइबार अनेक समस्या आसे ताकु से समाधान करे जहा को गोटे प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च बोली कहा जाय वेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च इमीडिएट प्रॉब्लम को निजर जतिके ज्ञान अछि तारि माध्यम रे अभ्यास माध्यम रे इम्प्लीमेंटेशन माध्यम रे प्रैक्टिस माध्यम रे सिखिबार प्रक्रिया होची एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च राइट एटा गोटे भलो क्वेश्चंस तुमे पाइबो आधरे तुमे ताको आगु को गले चैप्टर भितर गले तुमे आको सिखि पारिबो सब अछि तुमरा आधरे ओके आ 17 पेज तुमे ताको देखिबो टिके टिके पढिबो सब दिन से जानि पारिबो प्रोफेशनल डेवलपमेंट तार ये कौन सेमिनार कथा लिखी है एग्जाम्पल दे कॉन्फ्रेंस कहले कौन ऑनलाइन शेयरिंग कम्युनिटी कहले कौन ये सब तक एक्चुअली आम कौन ऑनलाइन कनेक्ट हो गले तुम गोटे ग्रुप रही गले तुम से सब दिन इनफॉरमेशन गुड कंटिन्यूअसली पाइब है तेणु ये सब पाठ ए यूनिट तुम अच्छी तेणु तुम्हें पढ़ आ गोटे क्लास खाली अच्छी तादर आउ दुटा ब्लॉक अच्छी ता विषय टिके डिस्कशन आम करदे कल तुम क्लास ओवर हम आउ तुम आनिक निजे निजे पढ़ ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन तुम ये जिन बही पुस्तक खोजिक पढ़
Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Oh, thank you. Thank you. Good night. Yeah. Good night, sir.